So let us look into this problem now. Olympiad Pathfinder, multiple choice question number 13 from Newton's law of motion. A massive bead is threaded on a long light rod, one end of which is pivoted to a fixed point O. Initially, the rod is held horizontally and the bead is at a distance L from the pivot. Coefficient of friction between the rod and the bead is mu. Which of the following statements correctly describe relation between angle theta that the rod makes with the horizontal after the rod is released and in time t? So 4 options are given. So we have to conclude which all are correct. This rod is long. But it is massless. Since it is saying that light rod, so mass of the rod is 0. Pivoted at one end. So when it will be released, it will turn about this pivoted point in a circular arc. So because of that, the bead which is free to move on the rod against the friction force. So this bead will also travel along the rod. It is a constant motion. It will not come out of the rod. So let us make the diagram after t time and see how the things. So this is your rod. So let us say in t time, the rod has taken this position. The pivot point is here. So when it takes this position, it is making an angle theta with the horizontal. Initially, the bead was here. So when it turned and after t time taken this position, let us say the bead is has taken this position. This bead is moving on the rod, so there will be a normal reaction on the bead offered by the rod, and as per Newton's third law, the same normal reaction will act on the rod
perpendicular to its surface. So let us make this is the pivot point O. So because of bead, it is exerting a normal force on the rod this normal force will create a torque about O. So we can write the torque work acting on the rod about O is N into this distance. Let us give a name to this distance as L plus X. Why? Because initially the bead was at L distance away from the pivot point. So now the length has increased and it has become L plus X. So N into L plus X will be the torque about O due to this force on the rod. Since rod is massless, so it does not have any gravitational pull, so no other force other than this, and maybe the friction force because of the motion of the bead on the rod. So let us focus on this first. This torque about O, we can write I naught alpha. But what will be I naught? Means moment of inertia of the rod about O. Since the mass of the rod is 0, so its rotational inertia will be 0. So this will be your 0 into alpha. So it is 0. So N into L plus X is equal to 0. L plus X cannot be 0 because it's a distance. And gravitational pull is working on the bead. So it will definitely will move downwards. So L plus X will not be 0, it's a distance. So for this equation to satisfy, your N should be 0. Now let us make the block diagram of bead. Which forces are acting on the bead? The normal reaction, just equal and opposite to this, and the gravitational force. If we say that mass of the bead is mb, so
mb into g, and this will be n. But n we already got 0. So on the ball, on the bead, only mbg is working. We know by the friction force formula that friction force on the bead will be mu into n, but n is equal to 0. So mu n will be 0, means friction force which we were expecting that it should act on the bead in this direction against its motion. So this friction force also is 0. Means total force acting on the bead is only mbg, the gravitational pull. So what we can understand from it, that the bead will fall with the gravitational acceleration g. It's a free fall. Since it is a free fall, and we know free fall in the vertical direction, and we know in t time how much vertical displacement it will go through. That if we say it is h, initial velocity in the vertical direction was 0, so 0 into t plus gt square by 2. So it will be gt square by 2. So in t time, the bead has covered exactly in the vertical direction a distance h, that is given by gt square by 2. Gt square by 2. This one was L. The bead position is here. The bead position is here. This one is gt square by 2. Initially the bead was here. That was L distance away from the pivot point O. This we have taken as L plus x. This is L gt square by 2, and this we are saying that it is making theta angle from the horizontal after t time as per question. So from this triangle, tan theta will be, let us say this as A and B. So tan theta will be AB by OA. But AB is your GT square by 2, and OA is your L. So theta will be tan inverse GT square by 2L. As we can see, the friction force is always 0
because normal reaction force is 0. So irrespective of the value of coefficient of friction mu, the theta will be coming as tan inverse gt square by 2L. So you can check the option. If mu is negligible, that is fine, because it is not depending on theta, because n is in all the case because of your light rod. The rod being light, that is massless, n is 0. So mu is negligible, theta is equal to this. So that is fine. So this is okay. If mu is finite, theta is equal to this. So this also is correct. If mu is finite, theta is smaller than this will not be correct, because all the time theta will be equal to this. None of the above statement is correct. No, A and B will satisfy this equation. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ये जो बीड है, मैसिव बीड है, मींस इट हैज अ गुड मास इन इट. बट ये जो रॉड है, विच इज वेरी लॉन्ग and very light, means it does not have the mass at all. We can neglect the mass of the rod. तो इसमें कुछ है नहीं. अब जब आपने इसको पहले होल्ड किया हुआ था, यहाँ पे पाइवटेड है, आपने इस रॉड को छोड़ा, रॉड इस पाइवट पॉइंट के अबाउट टर्न होने लगेगा. टर्न होगा तो ये बीड भी रॉड के अलोंग वो मूव करना शुरू करेगा. तो हमने बोला टी टाइम के बाद इट हैज टेकन दिस पोजीशन, ऐसा पोजीशन ले लिया. पहले ऐसा था, वैसा हो गया, थीटा एंगल बना रहा है. ये इनिशियली एल डिस्टेंस अवे था पाइवट पॉइंट से. टी टाइम के बाद एल प्लस एक्स हमने मान लिया. ठीक है. अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस लाइट रॉड का यहाँ पे. बीड क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, वेट की वजह से इस पे एक फोर्स लगाएगा. दैट उस फोर्स को हमने एन बोला, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो रॉड पे अभी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है. आप ये भी बोल सकते हैं कि बीड ऐसे मूव कर रहा है, तो बीड पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और इस पे रॉड पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा. ठीक है. इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क ले रहे हैं इन दोनों फोर्स का, तो म्यू एन तो इसी के अलोंग है, मोमेंट आर्म 0 है, तो इसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. टॉर्क लगेगा एन की वजह से, तो हमने लिख दिया एन इंटू एल प्लस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस एल प्लस एक्स है. अब ये हम जानते हैं, टॉर्क अबाउट ओ वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड विल बी 0, क्योंकि उसका मास 0 है. तो ये पार्ट आपको 0 हो गया राइट हैंड साइड में. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा पार्ट 0 होगा, इधर ये 0 हो या ये 0 हो. लेकिन L प्लस एक्स एक डिस्टेंस है. जब नीचे की ओर टर्न हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ मास there is no way that the bead will move towards this and reach here. So we cannot say, so we should not say that L plus x will be 0. तो हमको सेटिस्फाई करने के लिए एक ही चीज बच जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स 0. अब ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जब 0 होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे मालूम है म्यू इंटू एन होता है. म्यू इंटू एन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है,
फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, है ना। अब यहाँ पे हमने बीड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, जिसमें दिखाया है कि बीड पे नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ रॉड इस डायरेक्शन में लग रहा है, बीड का मास है तो mvg नीचे की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट द मोशन लग रहा है क्योंकि बीड इस तरफ मूव कर रहा है अलोंग द रॉड, लेकिन n जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है, ये n भी जीरो है, तो सिर्फ इस पे जो टोटल फोर्स है वो mvg है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बीड का जो मोशन है वो फ्री फॉल है, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा क्योंकि उस पर और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली दिस फोर्स इज वर्क। तो अब अगर जी एक्सेलरेशन से बीड नीचे की ओर आ रहा है तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वी कैन राइट initial velocity into t plus gt square by 2, but initial velocity of the bead क्योंकि स्टेशनरी था इनिशियली तो ज़ीरो है, तो h जो वर्टिकल डायरेक्शन h जो t टाइम में कवर करेगा, ये जो ए बी कवर कर रहा है वो जी टी स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। तो अब हम एक ट्रायंगल डायग्राम बना लेते हैं कि बीड पहले ए पे था, अब जी टी स्क्वायर बाई 2 से वर्टिकली डाउन हो गया, वो इस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा नहीं, इस डायरेक्शन में बीड का मोशन होगा नहीं, तो इट हैज टू फॉल ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये L है, ये जी टी स्क्वायर बाई 2 है, तो tan थीटा हम इस ट्रायंगल से लिख देंगे ए बी बाई ओ ए जी टी स्क्वायर बाई 2, ओ इज योर L, तो थीटा आपको ये मिल गया। अब किसी भी म्यू के लिए, बिकॉज ये म्यू से इंडिपेंडेंट हो गया ओवरऑल इक्वेशन, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा बिकॉज आपका n जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है वो जीरो है, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज जीरो है। तो म्यू चाहे कुछ भी हो, नेग्लिजिबल हो, फाइनाइट हो, कुछ भी हो, थीटा का वैल्यू यही होगा, तो उसके लिए आपका ऑप्शन ए एंड बी इज विल बी करेक्ट होगा। इसको ए पोजीशन लिख देते हैं, इसको बी